अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we are going to discuss about the unit number 12, population growth and world food supply. दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और उसमें खुराक का तनासुब या उसकी सप्लाई। First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter. Earth is becoming increasingly crowded. Global population stands at just over 7 billion and is rising by 78 million people per year. Now, if that number does not sound like a lot to you, think about it in this way. We are adding close to the population of Germany every year to our crowded planet. Currently, 134 million children are born every year. That is 367,000 per day, and there are approximately 56 million deaths per year. At this rate, the population is predicted to reach 8 billion by 2027 and 9 billion by 2046. It's mind-boggling to think that global population, when many of you were born, stood at just over 5 billion. It demonstrates how global population increases has been driven by surging population of Africa and especially Asia. Regardless, we find ourselves in a position today where the world is currently not able to feed all of its inhabitants. Currently, more than 1 billion people are estimated to lack sufficient food, and more than twice that number do not receive adequate nutrition. This situation will likely become a lot more dire in the future. In fact, predictions for population increase diverge significantly in the later parts of the century because some models assume mass mortality due to widespread famine. To make matters worse, climate change is predicted to cause major problems to crop yields, especially in parts of the world where the population is growing the fastest. These shortages will likely lead to mass migration of huge number of people, possibly entire nations. Agriculture is an essential part of every society. 40% of the Earth's surface is managed for cropland and pasture. That is more than for any other activity, including forestry, which comprises 30% of Earth's area. In underdeveloped countries, approximately 70% of the population live in rural areas where agriculture is the major activity. There are many diverse sources of foods, and population around the world have very different diet and demands. In addition to crop and livestock, fish is stable diet in many countries. Projections for climate change differ significantly for these various food sources. Thus, we will discuss them separately. For crop farming, in particular, the impact of climate change is very different for agribusiness run by multinational corporation in the developed nation than for family cooperated farms in the developing world. Climate change will have very different impacts on different continents, and socio-economic factors will govern the ability of nation to respond. Even though the south central and southwestern US are like to face extreme drought in the coming decades, inhabitants and businesses should by and large be able to adapt. It will be a starkly different situation in southern Africa, India, and Southeast Asia, Mexico, northwest Brazil, Southern Africa, and West Africa, where climate change will be coupled with a uh, general lack of coping mechanism. In all of these regions, the impact of climate change and the inability of societies to fully cope with it
will potentially result in security issues including soaring food prices and military conflicts. Food shortage will not be a new problem in many places. Mass migration driven by food supply have been an important part of human evolution and a tragic part of the history of many nations, especially those in Africa. As we saw in Module 2, famine caused by drought is thought to have caused the collapse of the Mayan civilization in Central America around 850 AD. Most recently in China, famine in the latter part of the 19th century caused the death of some 60 million people. Student, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the translation of this chapter. The alarming and incessant growth of population is causing serious economic problems in almost all continents. Great pressure is being placed on arable land, water, energy, and biological resources. As the world population grows, the food problem will become increasingly severe. The most vulnerable will be population in developing countries. The per capita availability of food grains has been declining for the past 24 years. Certainly, with 250,000 people being added to the world population each day, the need for grains and all other food will reach unprecedented level. तकरीबन तमाम बड़े आज़मों में ख़तरनाक और मुसलसल अफजाइश आबादी संजीदा मौशी मसाइल का सबब बन रही है। काबिल काश्त अराज़ी, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। जब दुनिया की आबादी बढ़ जाएगी तो खुराक का मसला शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तरक्की पजीर ममालिक में आबादी सबसे ज़्यादा गैर महफूज होगी। पिछले 25 सालों से फ़ीकस अनाज की दस्तयाबी कम हो रही है। यकीनन रोज़ाना दुनिया की आबादी में 4 मिलियन इजाफे के साथ अनाज और दूसरी तमाम खुराक की ज़रूरत नाकाबिल बयान सतह तक पहुँच जाएगी। नीचे दुनिया की आबादी और इसके अफजाइश के रुझानात दिए गए हैं। 10,000 years ago, 10 million people. By 1850, population was 1 billion. 80 more years to reach 2 billion in 1930. 45 years it doubled again, 4 billion in 1975. 12 years to reach 5 billion 1987, 6 billion in 1999. By the year 2020, there will be 8 billion. 10,000 साल पहले 10 मिलियन लोग थे। 1850 तक आबादी 1 बिलियन थी। मज़ीद 80 सालों तक 1930 में 2 बिलियन तक पहुंच गई। 45 सालों में ये दुगना हो गई। 1975 में 4 बिलियन थी। 12 सालों में 5 बिलियन तक पहुंच गई और 1999 में 6 बिलियन और 2020 साल में ये 8 बिलियन हो जाएगी। There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 1. Economic, mali means profitable. Resources, wasail, assets. Alarming, khatarnak, dangerous. Vulnerable, kamzor, weak. Severe, shadid, serious. Added, izafa karna, increase. Incessant, lagatar, constant. Certainly, yakinan, surely. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 1. First one, economic. The economic growth is very slow. Resources, all pollution is simply an unused resource. Alarming, it was always exciting in an alarming way. Second paragraph, there are about 250,000 people added to the planet per day. This exponential growth is mostly happening in developing nation. रोज़ाना इस कुरा अर्ज़ पर 4 मिलियन अफराद का इजाफ़ा होता है। ये बयान करदा अफजाइश ज़्यादातर तरक्की पजीर अक़वाम में वक़ूफ़ पजीर हो रही हैं। Paragraph number 3. More than 99% of the world's food supply come from the land, while less than 1% is from ocean and other aquatic habitats. The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water and energy. As the human population grows, the requirements for these resources also grows. दुनिया की आलमी खुराक की रसद 99% से भी ज़्यादा ज़मीन से आती है, जबकि 1% से भी कम समंदरों और दूसरे आबी ज़खायर से आती है। खुराक की बेहतर ज़राए की मुसलसल पैदावार, वसी और ज़रखेज़ अराज़ी, ताज़ा पानी और तवानाई पर मुनहसर है,
जब इंसानी आबादी बढ़ती है तो इन वसाइल की ज़रूरियात भी बढ़ती हैं. Even if these resources are never depleted on a per capita basis, they will decline significantly because they must be divided among more people. At present, fertile agricultural land is being lost at an alarming rate. The shortage of productive fertile land combined with decreasing land productivity is a major cause of current food shortage. हत्ता कि अगर ये वसाइल कभी भी ख़त्म ना किए जाएं तो ये फ़ीकस की बुनियाद पर ये वाज़े तौर पर कम हो जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा लोगों में यकीनन तकसीम हो जाएंगे. मौजूदा सूरत हाल में ज़रई ज़रख़ेज़ ज़मीन ख़तरनाक शरह से कम हो रही है. मौजूदा खुराक की कमी की सबसे बड़ी वजह पैदावारी ज़रख़ेज़ अराज़ी में कमी के साथ साथ ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी भी है. There is a question in a box. What does the word depleted mean? Depleted जो word है उसका क्या मतलब है? So the answer is to be depleted means to be spent or exhausted or consumed. खर्च करना, कम हो जाना या ख़त्म हो जाना, इसका ये मतलब होता है. Student, there are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym related to these passages. First one, exponential, बेतहाशा, rapid rate. Supply, फराहमी, provide. Adequate, मुनासिब, enough. Ample, बहुत ज़्यादा, sufficient. Fertile, ज़रख़ेज़, productivity. Decline, कम करना, reduce. Shortage, कमी. Low. Cause, सबब, origin. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph. Exponential, prices have increased at an exponential rate. Supply, the town is in need of basic medical supplies. Adequate, the machine does an adequate job. मेरे यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी की आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपने स्पेलिंग्स को याद रखना है, इनके मीनिंग, सिनोनियम वगैरह को याद रखना है. Paragraph number 5. Water is another critical item for all the crops. Massive amount of water is required during the growing season for cultivation. In fact, agricultural production consumes more fresh water than any other human activity. In many countries, people are facing shortage of fresh water. Competition for water resources among individual regions and countries and associated human activities is already occurring with the current world population. तमाम फसलों के लिए पानी एक दूसरी लाजमी चीज़ है. काश्तकारी के लिए फसलों की नशोनुमा के मौसम में पानी की भारी मिकदार की ज़रूरत होती है. दर हकीकत किसी और इंसानी सरगर्मी की निस्बत ज़रई पैदावार ताज़ा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करती है. बहुत से ममालिक में लोगों को ताज़ा पानी की कमी का सामना है. दुनिया की मौजूदा आबादी में अफराद, इलाकों और ममालिक नेज़ मुश्तरका इंसानी सरगर्मियों के माबैन पानी के वसाइल के लिए मुकाबलाबाजी पहले से ही वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है. Water resources critical for irrigation are under great stress as populous cities, states and countries require and withdraw more water from rivers, lakes and aquifers every year. A major threat to maintain future water supplies is the continuing overuse of surface and ground water resources. काश्तकारी के लिए लाजमी आबी वसाइल बहुत ज़्यादा दबाव में हैं क्योंकि गुंजान आबाद शहरों, रियासतों और ममालिक में ज़्यादा पानी दरियाओं, झीलों और ज़मीनी आबी ज़खायर से हर साल निकालने की ज़रूरत पड़ती है. सतही और ज़ेर ज़मीन आबी वसाइल का ज़रूरत से ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल मुस्तकबिल में पानी की फराहमी को बरकरार रखने के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है. There is a question in a box. Do you also face shortage of water in your locality? Why? So the answer is yes, we face shortage of water in our locality because there is no proper water management. क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको अपने इलाके में पानी की कमी का सामना है और क्यों. तो आंसर ये है कि बिल्कुल पानी की कमी का सामना है और इसकी वजह यह है कि बेहतर पानी की मैनेजमेंट जो है ना होने की वजह से. There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym related to the paragraph number 4. First one, critical, नाजुक, condemning, massive, बहुत ज़्यादा, huge, cultivation, काश्तकारी, growing, in fact, दरअसल, actually, consumes, इस्तेमाल करना, ingest, irrigation, आबपाशी, means supply of water to land, threat, खतरा, warning, withdraw, निकालना, remove करना. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 4. First one, critical. You are in critical condition. Massive. The country suffered a massive loss.
cultivation. These fields have been under cultivation for years. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है। पैराग्राफ नंबर 5, fossil energy is another prime resource used for food production. Nearly 80% of the world's fossil energy is being used by the developed countries. The intensive farming technologies of the developed countries use massive amount of fossil energy for fertilizers, pesticides, irrigation, and for machines as a substitute for human labor. खुराक की पैदावार के लिए फॉसिल एनर्जी एक और अहम ज़रिया है। दुनिया भर में फॉसिल एनर्जी का तकरीबन 80% तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक की पैदाइशी अफ़ज़ा, ज़रूरी तकनीकें, खादों, जरासीम कुश अद्वियात, आबपाशी और इंसानी मेहनत के नेमुल बदल के तौर पर मशीनों के लिए भारी मिकदार में फॉसिल एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। In developing countries, fossil energy has been used primarily for fertilizers and irrigation to help maintain yield rather than to reduce human labor input. Because fossil energy is a finite resource, its depletion accelerates as population in needs for food and services escalate. Thus, cost of fuel increases everywhere. तरक्की पजीर ममालिक में फॉसिल एनर्जी को बुनियादी तौर पर पैदावार को कायम रखने के लिए मदद की खातिर आबपाशी और खादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसके कि इंसानी मेहनत के इस्तेमालात को कम करने में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि फॉसिल एनर्जी एक महदूद वसीला है। इसकी कमी में इजाफा हो जाता है जब आबादी की खुराक और दीगर ज़रूरियात की तलब बढ़ती है। इस तरह ईंधन की कीमत हर जगह बढ़ जाती है। There's a question in a box, how is fossil energy a finite resource? So the answer is, as we cannot increase fossil fuels, it is finite resource. There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym related to the paragraph number 5. First one, prime, बुनियादी, basic. Intensive, जोरदार, rigorous. Substitute, नेमुल बदल, replacement. Yield, पैदावार, product. Reduce, कम करना, lessen. Depletion, बहुत ज़्यादा कमी, reduce. Escalate, इजाफा करना, shoot up. Services, खिदमात, means favors. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 5. First one, prime. This is a matter of prime importance. Intensive, she spent the night in intensive care unit. Substitute, nothing can substitute for mother's love. बट यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी की आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद रखना है, इनके मीनिंग और सिनोनिम को भी याद करना है। पैराग्राफ नंबर 6. Certainly, improved technology will assist in more effective management and use of resources, but it cannot produce an unlimited flows of those vital natural resources that are the raw material for sustained agricultural production. For instance, fertilizers enhance the fertility of eroded soil, but human cannot make topsoil. Indeed, fertilizers made from finite fossil fuel are presently being used to compensate for eroded topsoil. A productive and sustainable agricultural system depends on maintaining the integrity of biodiversity. यकीनन बेहतरीन टेक्नोलॉजी ज़्यादा मौसर तरीन इंतज़ाम और वसाइल के इस्तेमाल में मदद करेगी, लेकिन ये उन अहम कुदरती वसाइल को लामहदूद तौर पर पैदा नहीं कर सकती जो कि ज़रूरी पैदावार के जारी और सारी निज़ाम के लिए खाम माल हैं। मिसाल के तौर पर खादें कटाव वाली मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करती हैं, लेकिन इंसान ज़मीन की बालाई परत नहीं बना सकते। बेशक ज़मीन की कटाव वाली बालाई परत की तलाफ़ी करने के लिए मौजूदा दौर में महदूद फॉसिल एनर्जी ईंधन से तैयार करदा खादें इस्तेमाल की जा रही हैं। एक पैदावारी और मजबूत ज़रूरी निज़ाम का इन्हसार कसीरुल नवाई हयात की सालमियत को बरकरार रखने पर होता है। There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 6. First one, assist, मदद करना, help. Vital, अहम, important. Sustained, मुस्तहकम, stable. Enhance, बढ़ाना, increase. Eroded, खस्ता हाल, crumble. Finite, महदूद, limited. Compensate, तलाफ़ी, repay. Integrity, कामलियत, uprightness. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 6. First one, assist. My friend will assist me in this program. Vital, she is a vital part of my family. Sustained, he sustained a broken rib. Paragraph number 7. Strategies for the future must be based on the conservation and
careful management of land, water, energy and biological resources needed for food production. Yet none of these measures will be sufficient to endure adequate food supplies for future generation unless the growth in the human population is simultaneously curtailed. मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमलियों की बुनियाद खुराक की पैदावार के लिए ज़रूरी ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल की बका और मुहतात इंतज़ाम पर होनी चाहिए। ताहम आने वाली नस्लों के लिए खुराक के ज़राए की मुनासिब फराहमी के लिए उनमें से कोई भी इक़दामात नाकाफ़ी होंगे जब तक कि उनके साथ साथ इंसानी आबादी में इजाफ़े को कम ना किया जाए। Several studies have confirmed that to maintain a relatively high standard of living throughout the world, the optimum world population should be less than 2 billion. Therefore, from now until an optimum population is achieved, strategies for the conservation of land, water, energy, and biological resources are to be implemented effectively. Maintaining a sound and productive environment all over is essential. बहुत से मुतालियाती शवाहिद ने इस बात की तस्दीक की है कि पूरी दुनिया में निस्बतन बेहतर मेयार ज़िंदगी को कायम रखने के लिए पूरी दुनिया की मुनासिब तरीन आबादी 2 बिलियन से कम होनी चाहिए। इसीलिए अब से लेकर मुनासिब तरीन आबादी हासिल होने तक ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनसूबा बंदियाँ मौसर तरीके से नाफिज होनी चाहिए। मजमूई तौर पर दुरुस्त और पैदावारी माहौल का कायम होना ज़रूरी है। स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन अ बॉक्स। What other words can you use to replace optimum? Optimum की जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं? The word optimum can be replaced by the word optimal or best. There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym related to the paragraph number 7. Sufficient, काफ़ी, enough. Curtailed, कम करना, reduce. Relatively, निस्बतन, comparatively. Essential, ज़रूरी, necessary. Confirmed, तस्दीक करना, established. Strategies, तदाबीर, plans. Implemented, अमल दरामद करना, execute करना, ensure, यकीन दहानी करना, secure. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 7. First one, sufficient. Have you had sufficient sleep? Curtailed. The new law will curtail police power. Relatively. The serial are relatively important. बट यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के अपने स्पेलिंग्स को, मीनिंग और सिनोनिम्स को याद रखना है। आई होप बेटा आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।